has intensified the situation. Notably, the international community has weighed in on this matter, with the US joining Canada in calling on India to cooperate in the investigation of Niger's murder. The murder of Sukhdeep Singh in Canada worsened the situation. In response to Niger's killing, these events sparked widespread protest, reaching as far as Amritsar. In our previous session, we discussed the Sanja Punjab movement in Pakistani Punjab, its connection to Khalistan, and its primary support in Pakistan from the Ahmadiyya and ex-Muslim community of Punjabi origin. Their vision is to create a greater Punjab in which ethnic Punjabis unite around shared culture, similar to Khalistan, but without the Sikh religious component. We also discussed Pakistan's role in the Khalistani conflict, as well as the future prospect for Sikh and non-Sikh Punjabi communities across the subcontinent. In today's session, we'll look closely at the dynamic of Canada-India relations and how the tragic events surrounding Niger's murder have affected them, building on our previous discussion. We will revisit these critical issues, shedding light on the Sanja Punjab movement's impact on Pakistan and examining how Niger's tragic death has influenced Canada and India's relation. We have our speakers with us from our previous session: Furqan Ahmed, Sid Siddiqui, Aditya Matoria, Shaji, Devi, and Karan Tushar Vedanti, and also me. Over to you, Shaji. Okay, thank you very much. We've basically gone through some of the news articles and various statements which were passed by the Canadian Prime Minister Justin Trudeau. We thought that we've kind of covered roughly within our episode 2 uh, what the situation which was developing. But we thought this actual news in terms of how this is an ongoing story and it's developing and it has ramifications all around the globe. We should discuss that in detail. First, we're going to have a quick look in regards to what various associated individuals and governments have stated. Uh, and then we will have a conversation in regards to that in detail. So we're just going to share the screen uh, in regards to that, and then we can basically begin the conversation. So, Sid, are you ready? Particular topic to we start with हमें जगमीत के मेरे ख्याल से जो मैसेज है इससे स्टार्ट करना चाहिए regards to हरदीप सिंह जी so जी, आप स्टार्ट करें. if you would kindly share my screen मैं उसकी वीडियो चला दूँ आपको दिखा दें कि उन्होंने क्या कहा है जगमीत सिंह साहब ने. थैंक यू जी. अभी हम देखते हैं जी जगमीत सिंह साहब ने इस मामले में क्या कहा है. We can't hear your video. Sid, for some reason the audio is not coming in. I guess if you can share the screen again. Yeah. I'll fix that. That's not a big problem actually. ये जी ठीक चलें जी. Is it available now? Shaji, can you please share that? Yes. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਹਕੂਮਤ
ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਆ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। I want you to know you can trust New Democrats and everyone in this House will fight with everything we have to ensure that this serious, reprehensible matter is treated with the utmost focus and that we bring justice. तो शाह जी, जगमीत सिंह साहब ने ये बोला कि भाई this particular crime should be brought on to justice. अभी लास्ट टाइम हमें पता चला कि जस्टिन ट्रूडो ने जो द प्रूफ दैट ही कंसिडर्ड वो दिए हैं इंडियन एम्बेसी को। लेकिन ये दो कंट्रीज का एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है। सोचने की बात ये है, लेट अस सपोज दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रूवन, what justice would be served to whom, by what means, and what would justice look like in that case? So I would like to hear your thoughts on that कि क्या possibility है justice की? Let us assuming that what जो जस्टिन ट्रूडो कह रहा है वो सही है और इंडियन गवर्नमेंट इसमें मुलविस है, अगर हम अज्यूम करते हैं, साबित हो जाता है तो फिर क्या होगा? जी, पहली बात तो ये है कि अगर ये साबित हो जाता है, दैट वुड बेसिकली मीन दैट देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज ramifications in terms of how India is viewed globally. That's going to be point number one. Point number two, I don't think majority of the Western countries were even expecting a reaction like this. जिस तरह जयशंकर ने कुछ बातें की हैं, और अगर ये पार्लियामेंट के अंदर उस तरीके से रेज करते भी हैं, द वे दे आर ट्राइंग टू रेज ऑल दीज थिंग्स, इट्स एक्चुअली गोइंग टू नॉट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ अ prosecution. I don't think there is going to be any prosecution of the Indian government or anything else. At the most, what can they do? Put some embargoes on? Can they even afford that? Were they able to afford that in the case of Russia? Have they even dared to do that in case of China? Have they dared to do that in regards to, have they been able to curtail Iran really? But when it comes to India, India is a more than a strategic partner. Not only is it basically for the West, we have to analyze what does India actually mean to the West. It is an alternative, a fast developing decoupling of China, a replacement of China. On top of that, not on it is also a strategic partner which they have to rely upon. If they lose India in those regards, specifically if the United States was to go ahead and pass those sanctions on, then obviously the relations between China and India are going to become better in a way, and that would be a very strong and a very disastrous situation for the United States, where they are counting on India in the South China Sea to counter developing China, a very fast booming China. And not to forget the Russian aspect of the whole entire situation. Again, if you have a look at that, uh, there would be no qualms left for India in regards to show any mercy. Secondly, yes, so the Indians responded by canceling the visas of a lot of Canadian citizens if they were to apply for a visit or something. Uh, and majority of the people who try to visit India, apart from a few holiday makers, are basically people of Indian origin and mainly Sikh people. So on both sides, Canada did the same thing. Again, that is affecting who? That is affecting majority of the Sikh diaspora. So I don't think, if in terms of what you're regarding as justice,
There is nothing which is going to come out of it. We've not seen any government being prosecuted by any other government, at least in our lifetimes, apart from a few minor countries, like for example, the ex-Soviet bloc of sorry, not Soviet, Yugoslavia. Uh, Apart from the leader of Serbia, one of the people from there, I don't think anyone has been prosecuted. Who's been prosecuted? Uh, for the WMDs, nobody's been prosecuted for that. Were the Western countries ever held accountable? No. So I don't know what kind of justice you're actually speaking of. And if even if it was proven that India basically went into Canada and they knocked off this guy in that way, तो इससे पहले रशियन स्पाइज ने इस तरह की चीजें की हुई हैं, इंग्लैंड में की हुई हैं, and nothing ever happened. It's just a big news, and then people forget about it. Obviously, the intelligence services operate in a different way, but at the end of the day, this is what it is. तो मेरा तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आप जस्टिस सर्व की बात करते हैं तो आप कल्प्रिट किसको बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा जिसने असैसिनेट किया है या गोली मारी है, उस उसको जाके आप कोर्ट के अंदर ट्रायल के ऊपर डाल देंगे, and whatever comes out of that, that is the maximum which can be achieved in regards to that, in my opinion. तो इसका तो फिर मतलब ये बनता है ना शाह जी के द सिख डायस्पोरा, एनी पर्सन ऑफ सिख ओरिजिन हु होल्ड्स, जो कि अपने आप को खालिस्तानी समझते हैं, जो कि समझते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट जो सी है उनको किसी, ना सिर्फ के इंडिया के अंदर बल्कि वेस्ट के किसी, अगर कनाडा के अंदर जाके उनको मार सकते हैं, दैट इसका तो मतलब है नन ऑफ देयर लाइव्स आर सेफ इन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और एनी अदर यूरोपियन कंट्री। फिर तो जगमीत सिंह सही कह रहा है ना कि भाई ये हमारी जिंदगियां जो सी हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से सेफ नहीं रही हैं। व्हाट इज द, वेयर डू पीपल गो फॉर सेफ्टी? दे गो टू द वेस्ट। लोग पॉलिटिकल असाइलम कहाँ पे लेते हैं? वेस्ट में लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन रहेगी, हमारी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं होगा, हम कम से कम हमें जिंदा रहने का हक मिलेगा। तो खालिस्तानियों को क्या जिंदा रहने का भी हक नहीं मिलेगा? वेस्ट में भी नहीं। बिग क्वेश्चन। नहीं, अगर खालिस्तानियों को जिंदा रहने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज गोइंग ऑन। अब अगर फॉर एग्जांपल आप खालिस्तानी डायस्पोरा को भी देखें, एंड आई एम गोइंग टू सेपरेट देम बाय रेफरिंग टू देम एज खालिस्तानी diaspora and not rather the complete Sikh community who resides in the Western countries. इसके अंदर एक point यहाँ पे ये है कि what else are they involved in? What you'll discover is that just like other ethnic minorities, there is a large proportion of them who are involved in gang fights and gang violences. Having said that, money laundering and whatnot. तो अब उन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हो? क्योंकि अगर आप देखो तो many people who are associated to this have been convicted for money laundering. Many of them have been questionable in terms of the kind of lifestyles they lead in the Western countries as well. So there is nothing hidden in regards to that either. तो दूसरी चीज ये है, यस आई वुड एग्री दैट इट्स वेरी फार फेच टू बेसिकली स्टेट कि निज्जर को जिस तरह फॉर एग्जांपल टेररिस्ट बोला जा रहा है इन by at least the Indian side. There is no proof of his terrorism. His association is there. अगर वो रेफरेंडम के साथ seeks for justice वाली situation के अंदर वो आवाज ना उठाता, and that is something which we need to see. So he would have never come to the limelight. And this kind of situation would have probably never developed, but it did develop in that way. And India did come out and raise an eyebrow in regards to the kind of person he is.
बट अगेन आप किस तरीके का, मैं आपसे फिर यही क्वेश्चन करूंगा कि आप ये जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस और सेफ्टी की आप जिस तरीके से बात करें, वो तो हर जगह पे मूवमेंट पे है। वो तो आपकी जहाँ पे भी मूवमेंट होगी, इफ you're running a separatist kind of a movement from any country, स्पेसिफिकली जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज नहीं है, तो आपका रिजल्टेंट उसके अंदर काफ़ी सिमिलर ही आएगा। अभी आप साउथ अफ्रीका के अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर देखें, इसी हफ्ते वहाँ पे देर आर पीपल हु आर टेकिंग अ कंप्लीट ऑपोजिशन, और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई हुई है। द वाइट अफ्रीकान्स आर कंप्लेनिंग, वो रशिया की साइड ले रहे हैं, वो इंडिया की साइड ले रहे हैं, वो बड़ी डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीज़ें जो वेस्टर्न टकोसला है, इसको हम फॉलो नहीं करते। तो अब आप उनको कौन समझाएगा? Different people are fed up. People have seen a lot which has occurred in our lifetimes. We've all witnessed Iraq, we've all witnessed Afghanistan, we've all seen what happened in Somalia, we've all seen what's occurred in various places around the globe. And when something similar happens to Ukraine, और जय शंकर की मैं इस बात से agree करता हूँ, it was very well versed, and that statement, even though he's Indian and I'm of Pakistani origin, कि Europe and the West needs to stop thinking that their problems are the world's problems. सो इसके अंदर अब आप मुझे बताएं, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि खालिस्तानियों के लिए यहाँ पे कोई जस्टिस आ रहा है। दे आर जस्ट अ स्केपगोट इन दिस एंटायर सिचुएशन फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ वेरियस सिचुएशंस। आई डू नॉट बिलीव कि उनके बारे में ना कोई केयर करता उनके अलावा, और ना उनकी कोई इतनी वैल्यू है सिट। अच्छा, इसके हवाले से ना मैं एक सिख फॉर जस्टिस लीडर हैं पुन्नू साहेब, उनकी वीडियो जो है वो चलाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कनाडा के अंदर खालिस्तानी डायस्पोरा के कह लें एक लीडर भी शुमार किए जाते हैं, वेरी आउटस्पोकन पर्सन, रिस्पेक्टेबल नेम इन खालिस्तानी मूवमेंट। उनका रिस्पॉन्स इस हवाले से जो है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था। Sid, before we go to sharing the screen, I think Karan or Medusa, if you have any comments up till now, हाँ कुछ हाँ, बोलना है? बल्कि करण भाई को तो हमने इंसिस्ट करना है कि वो इसके ऊपर बोलें। या थैंक यार टाइम देने के लिए। आई अब देखिए, अब कनाडा का तो ब्लंडर डे बाय डे हो रहा है। लाइक yesterday they bring one Nazi guy into the parliament and they उसको वेलकम किया, उसको उसका स्वागत किया और उसको अप्रिशिएट किया गया। और ये वही वेस्ट है सॉरी ये मेरा थोड़ा गला खराब है, ये वही वेस्ट है जिसने नाजीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। So now you tell me how on this earth, मतलब कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी स्टेट है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, किसी बंदे को अपनी पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, उसका पता ही नहीं है बंदा कौन है। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ जोक। और उसके बाद अभी अपॉलॉजीज कर रहे हैं कि सॉरी वी ब्रॉट द रॉन्ग पर्सन इन। तो ये इसको कहते हैं होमवर्क। इनका जो कहते हैं ना कि जैसे एज ए मैच्योर कंट्री सोसाइटी आपका एक होमवर्क होता है बेसिक, कि आप क्लियर होते हैं कि आपने जो बात किसी को दुनिया में कहनी है उसमें क्या वेट है क्या नहीं है। अभी जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि लाइक जिन्होंने गोली मारी अभी तक तो वो बंदे नहीं मिले यार, मतलब बाकी तो बात ही छोड़ दो। मतलब ये तो यार इट्स काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहीं भी होता हो तो वो बंदे कम से कम आपको शूटर तो मिलते हैं कि गोली किसने मारी है। इनको अभी तक वो नहीं मिले। एंड इट्स एब्सोल्युटली, जैसे शाहजी ने कहा कि कनाडा इज स्टेट, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। इंडिया इज स्टेट, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ना उनका है जिनका नाम आ रहा है। एज आई सेड लास्ट टाइम, निजर को कोई जानता नहीं था। हु इज निजर, वेयर इज ही कम फ्रॉम, ठीक है जी, कुछ समथिंग हैपन इन कनाडा, ही गॉट किल्ड, ठीक है जी। नाउ आज की तारीख में हर बंदा, हर रिपोर्टर, हर जर्नलिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है कि बंदा कौन है, कहाँ से आया है, हाउ कम ही एंड अप इन कनाडा विद अ फेक पासपोर्ट। उसका नाम रवि शर्मा था कि निज्जर था, बात अभी पता ही नहीं किसी को।
उसके बाद उसका 2 बार सालम उसका रिजेक्ट हुआ। थर्ड, ही वाज ऑन द नो फ्लाई जोन इन अमेरिका, इन अमेरिकन लिस्ट। तो ऐसे बंदे को कनाडा में सिटीजन मिल रही है, बनाना रिपब्लिक ही है फिर ये। तो ये तो अब ये जो, मुझे तो ये लगता है कि इनके ऊपर ही उल्टा चले गया, जो इन्होंने खेलने की कोशिश की थी ना इंडिया के ऊपर, इनके ऊपर उल्टा चले गया, क्योंकि अब इनको काफी चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। कम से कम हमें तो नहीं देने पड़ेंगे, उनके जो देश के जो अवाम है उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, कि ये हमारा सिस्टम है कि कोई भी आरा गहरा नत्थु गहरा आके मुंह उठा के नकली पासपोर्ट लेके आपकी कंट्री में आ जाता है और उसको दूसरी कंट्री मांग रही है। पर देखिए शादी, आई एग्री विद दैट कि वो कन्विक्टेड नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं है, मतलब था, मतलब नहीं था। पर कन्विक्ट तो तब होगा ना जब उसको आप किसी के हाथ में देंगे जिसके खिलाफ केस चल रहा है। जब आपने बंदा ही नहीं भेजा, जब इंडियन स्टेट उसको मांगते रहे कि हाँ जी इसको वापस करो, वी नीड हिम फॉर, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो इंटरपोल की उसके उसके ऊपर उसका नाम था। मेरा आपका क्यों नहीं है? किसी और का क्यों नहीं है? कनाडा में लाखों लोग हर साल जाते हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? ये तो अब इस इंसिडेंस के बाद तो काफी जो सवाल है वो तो उठेंगे, उसका जवाब ये कैनेडियन स्टेट को देना पड़ेगा। इतना मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा करण भाई, कैनेडियन स्टेट को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि भाई वहां पे फेक पासपोर्ट लेके बंदा किस तरह घुस गया। इंडियन स्टेट को ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आप किसी दूसरी स्टेट में जाके जो सा बंदा फड़का के आ जाते हैं। ये कौन सी हल्लाशेरी है जी? सिद्धू जी देखो, ये तो बात तब माने ना जब वो प्रूव कन्विंस करे। जैसे निजर आज की तारीख में टेररिस्ट नहीं है क्योंकि नो बड़ी कन्विंस दैट, उसको किसी ने कन्वेक्ट नहीं किया। ये तो इल्जाम है ना, इल्जाम तो जो मर्जी लगाए बंदा, उसका क्या। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनलाइक द राइट विंग, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है? देखिए जो इंडियन स्टेट का जो जवाब होगा ना वो माना जाएगा। बाकी इंडिया इज फ्री कंट्री, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके आपका जो मर्जी कह दो, आपका क्या है? वो तो लोगों की स्टेटमेंट है ना। लोग तो जो मर्जी कहें, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, नेता नूता जो मर्जी स्टेटमेंट दें, पर जो इंडियन स्टेट का जो प्रॉपर नैरेटिव है या जो उनका अपना एक स्टेटमेंट है, वो तो नहीं मानते। वो कहते हैं यार ऐसे कैसे हो जाएगा। और साथ में यार उसके बाद मान लो कि यार सिद्ध भाई, और मान लो कि चलो इंडिया स्टेट ने किया भी है, तो ऐसा काम करेगी कि वो इंडिया के कॉन्सुलेट को इन्वॉल्व करना पड़े, वो सुपारी खुद दे के आया होगा। ये तो वही फिल्म होगी ना, कंपनी, भाई उड़ाना है किसी को, भाई उड़ाना है किसी को। तो अच्छा भाई क्या उड़ाने मान। से यार तो ये तो मैं बच्चों वाली, ये जो अगर इन्होंने किया भी होगा तो वो डिप्लोमेट को तो पता भी नहीं होगा बेचारे को। ये चलें, तो मतलब ये आपको क्या वाली लगता बात है कि भी इंडियन इंडियन स्टेट इतनी वेली है कि मतलब वो उसको काम पे लगाया हुआ है डिप्लोमेट को, कि तू जा सुबह उठ के जाई, वो तेरे को वहां पे मिलेगा टोरंटो में कैफे में बंदा, उसको जाके सुपारी दे के आई। हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, हाइपोथेटिकली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीवे। ये तो किसी भी दूसरा लॉजिक से नहीं बात बनती। इनका केस भाई साहब इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट में ना 1 सेकंड 10 सेकंड नहीं रुकता, कहीं पे भी ले जाओ। अगर होगा भी तो वो डिप्लोमेट की थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होगी यार। दूसरा ये एक तो है, माला मिला के, डिप्लोमेट के थ्रू तो वाकई में नहीं होगी। इस चीज हाँ, के वो लिए इतना वेला है इंटेलिजेंस कि एजेंसी वो आप भी होती बैग हैं। सुबह बैग लेके जा रहा है, पीछे पैसे पड़े हैं उसके 5 बिलियन, वो साइकिल पे जा रहा है हाँ, वो बंदा देखा और नीचे उन्हें गोली मारनी है। जैसे जो हिटमैन 3 आप यहाँ पे लगा रहे हैं। खैर, anybody else want to give their thoughts before we I show the next video? उनके एक पुन्नू साहिब हैं, उनका जो रिएक्शन था, आई थिंक वी शुड डिस्कस दैट एज वेल। I उसके think we बारे should में give a background in जी, regards to who the gentleman is. सॉरी टू इंटरप्ट यस यू यस सिड, शाह जी। जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू शादी। सिद, अगर आपके पास कोई कमेंट्स आ रहे हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं, तो देख लें आप, कोई उनमें से कुछ आपको सेंस बनती है तो। चलिए मैं उसको स्ट्रीमलाइन में लेके आता हूँ। अभी शाह जी जो से है वो पुन्नू साहिब का जो सा बैकग्राउंड देने थे, तो मैंने कमेंट सेक्शन अभी पढ़ना शुरू किया, देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
यार क्या जी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पुन्नू साहब का या जिस तरह भी उनका नाम प्रोनाउंस किया जाता है उनकी बात करें तो दिस इज़ अ पन्नू पन्नू जेंटलमैन। पन्नू 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 पन्नू, सही, थैंक यू वेरी मच। पन्नू साहब जो हैं, he's basically a gentleman who leads an organization by the name called Sikhs for Justice. He's the guy behind the referendums which have taken place uh, around around the world. In various places, he likes to state around the world, but it's mainly in a few Western countries. In recent times, this was a guy who basically was considered कि ये मर गया है. इसको assassinate कर दिया गया. He died in a car accident, but he re-emerged. So I don't know. It is a bit ironic कि all of a sudden in the last 7 or 8 months, चाहे किसी भी जगह के ऊपर आपके ये जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, they are being knocked off in one way or another. कहीं ना कहीं पे इनको चाहे जहाँ पे भी हैं मारा जा रहा है. इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर just in the last 6 months we've had 2 of them very curiously die as well. Not many people probably know that, but if you guys were to do a bit of research, you'll find out. So different stories हैं. Obviously, अगर आप देखें तो there is a whole other angle to this entire mission of खालिस्तान. अगर आप इस पूरे डायस्पोरा को देखें तो इसके अंदर लोग इनको क्राइम, ड्रग डीलिंग, इस तरह की चीज़ों से भी एसोसिएट करते हैं. That's very interesting. मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भी करते हैं. Now, is it the governments or are they the gang wars? That is the first question which needs to be answered. And when you've got somebody outspoken like Panu representing a movement, जहाँ पे अभी आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने, जस्टिन ट्रूडो ने, आपके डायस्पोरा के बारे में, आपके लोगों के बारे में पॉइंट आउट किया है कि one of the community members has been killed. He's being portrayed as an activist. उसके अंदर आप रात कोई इमोशंस के अंदर आते हैं और आने के बाद आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं. So this gentleman went on quote unquote stating that all Hindus or Hindus should go back to India because their allegiance is not with Canada, and Sikhs are different and their allegiance is with those guys. So that is racism. Hindus or Sikhs are not in a different boat when it comes to Canada or any other Western country. They're just as immigrant as each other. They are just as Canadian as one another. And when you're going to make a statement like that, जो सिंपथी आपके लिए गेन भी हुई थी आम अवाम के अंदर, आम पब्लिक के अंदर, यू डिस्ट्रॉयड दैट because you're telling another group of people to go back home where they came from, where you came from as well. तो मेरा ख्याल है उस स्टेटमेंट को हम सुन लेते हैं तो फिर आगे इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं. I'll just bring your screen onto the stage and will basically Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. On October 29th, Shaheed Nijar Kill India referendum is happening in Vancouver. I urge all Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th to vote on Indian High Commissioner Verma, responsible for the assassination of Nijar. You have to come, Indo-Canadian Hindus. So, Pannu Sahib is blaming High Commissioner of India.
maybe the justice that they were asking for is against this particular individual. शायद वो इंडियन हाई कमिश्नर के खिलाफ फिर इसका मतलब जस्टिस मांग रहे हैं. हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क आउट क्या जी? मैं यार आपको देखें, बात यह है कि इसके अंदर वो हाई कमिश्नर को कह रहा है या नहीं, दैट इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन. द मेन थिंग इज ही इज टेलिंग द हिंदूज टू गो बैक. When you're going to tell a group of people who are part and parcel of the same country you're residing in, they are just as much citizens as you happen to be. And if he's under some kind of an impression where he's being emotional, I don't think he's doing any favor to his own community. He's come out as a completely racist person. That is something which a white supremacist would say. This is something which a Nazi would say. This is something which somebody who's extremely racist or Hindu phobic would say. So it's one thing fighting. How can you be a fighter of freedom for your people, and at the same time be Nazi and fascist against a whole other group? Musliman, we happen to be some of us on this panel. I happen to be a Muslim. I understand that. ठीक है, वेरी वेल. एक पॉइंट के ऊपर जब लोग ये वाली बात करते थे कि मुसलमानों के खिलाफ खाली बात हो रही है, हाँ जी, मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही थी. बट एट द सेम टाइम अगर हम इस तरह की थ्रेट तो नहीं हम जाके कर सकते कि ओसामा बिन लादेन सही कर रहा है, और वी बिगिन टू सपोर्ट द टेररिस्ट एक्शंस of the terrorists who share a religion with us or refer to themselves as Muslims. We cannot do that. In that same way, Panu has come out as an extremely radical fascist person. And if he is leading the referendum, I would like to actually ask everyone else. Furkan is here, Toshar is here, you're here. That इस तरह के जो स्टेट है उसके अंदर would Khalistan be a fascist state? Will they? What will they do with their Hindu populace? What will they do with their Muslim populace? What will they do with their Christian populace? What are they going? If this is the kind of representation, this is like Osama bin Laden going and asking for a Islamic Caliphate. How is that any different? जहाँ पे आपको एलिमेंट्स इस तरह के कंपैरिजन के नजर आ रहे हैं, and who is a bright Sikh for a person like that? ठीक है, वो सारे सिखों को भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? उसका क्राइटेरिया क्या है कि कोई सिख भी है या नहीं है? यहाँ पे how is this any different to the right wing RSS narrative which we have been very outspoken about? It seems to me as just as radical. This person is as radical as Osama bin Laden. This person, not that he's gone out, I'm not sure if he's carried out any atrocities yet, but that's what he's endorsing. So I would differentiate on that aspect. लेकिन यहाँ पे questions तो ये हैं कि is what good is he doing for his community by making such comments? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे ज़हन में. दैट्स माय ओपिनियन एज़ वेल. Nobody has to agree to it. Go ahead, Karan, if you have something to add. No, right. हाँ जी तो It's a kind of, ये तो थोड़ी सी थोड़ी तो नहीं, काफी हार्श स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पन्नू साहब है वो ही लिव्स इन अमेरिका, राइट? तो उससे तो वो गेट अवे हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक यू कैन से व्हाटएवर यू लाइक टू से. बट ये इससे रिफ्लेक्ट होता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वेलकम इन योर सोसाइटी. अब जो जो पंजाब है जो ये मांग रहे हैं, वहां पे तो क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, एथियस्ट भी हैं, like other communities are there, Jains are there, like Buddhists are there. And it's not like, what do you think, only they're running around there in their trucks there? No, there are other community, even from the Sikh community कि जो उनके अपने लोग उनसे अलग हो चुके हैं, जैसे रविदासिया community है, जैसे वो रविदासिया, it's a different religion now in India and in Britain,
क्योंकि ये इनका ही पार्ट था सिखों का। तो 2007 और 8 में वियना में इनके जो संत साहब थे उनको उन्होंने गोली गोली मार दी कुछ, एंड दे डिसाइडेड टू मेक अ डिफरेंट रिलीजन एंड दैट गॉट द बिग चंक आउट ऑफ देम। मतलब कि जो आप मान लें कि लाइक 30-40% ऑफ सिख पॉपुलेशन नाउ कॉल देमसेल्फ रविदासिया, दे डोंट इवन कॉल देमसेल्फ सिख एनीमोर। एंड द मोर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पंजाब में है, इंडिया में। तो मींस लाइक इट्स मेकिंग अ, मैं तो कहता हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर क्राइस्ट इंडिया के लिए हुई है कि उनको ऐसी स्टेटमेंट्स ये बार बार दे रहे हैं, और इससे पता लगता है कि इनका माइंडसेट क्या है कि लाइक दे आर नॉट एबल। अगर मान लो, अगर हाइपोथेटिकली मान लो कि चलो इंडियन स्टेट ने किया भी होगा, तो इसमें आम हिंदू जो कनाडा में बेचारा वो काम कर रहा है तो उसका क्या कसूर है? उसने उसका तो उसकी तो गलती नहीं है। इतने ही हाइपोथेटिकली एक एक हर चीज की जैसे कहते हैं सीमा होती है, इन्होंने सीमा ही पार कर ली है। कोई भी बंदा इनको पसंद नहीं है, कोई भी हो, सारे बाहर जाओ, बस इनका राज चलेगा। जो ये कहे वो करो, जो ये ना, मैंने तो अभी सुनने में भी आया है, आई एम नॉट श्योर ये सच है कि नहीं है, कि ब्रैम्पटन में इन्होंने कई जगह को डिक्लेयर कर दिया खालिस्तान नहीं जी, वहां पे नॉन सिख जगह नहीं ले सकता। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है पूरी दुनिया में कहीं पे हुआ हो। ये तो हाँ कई जगह होता है कि उसको कहते हैं शरिया पेट्रोलिंग करते हैं कई जगह पे, पर वहां पे वो थोड़ा ना कहते हैं कि आप जगह नहीं ले सकते, यहाँ पे घर नहीं ले सकते। घर तो कोई भी ले सकता है। तो यहाँ तक आ गया उन्होंने ब्रैम्पटन में कह दिया है कि एक जगह मे बी हम सुना ही है मैंने, इट्स नॉट, मुझे आई कांट कंफर्म इट, बट इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सट्रीम कि आप दूसरे बंदे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट यस यू हैव ऑलरेडी सेटअप अ माइंडसेट। और शादी मैं तो इससे एक कदम और जाके बात करता हूँ। बात ये कि व्हाई शुड वेस्ट अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियंस वुड सपोर्ट सरदार सिख? या तो कुछ होना, ये कोई साइंटिफिक माइंडसेट है, इनके पास 25-26 नोबेल प्राइज है, या ये बड़े मतलब बहुत क्रिएटिव लोग हैं, या इनकी लैंड जो जिसके ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं वहां पे सारा वो पेट्रोल ही है, ठीक है? तो क्यों मतलब यहाँ पे इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने $9 बिलियन का ऑर्डर दिया हुआ है यूएसए को फॉर द बोइंग्स, टाटा एयर इंडिया का। तो आपको क्या लगता है वो जो जो कैपिटलिस्ट है, वो जो अंकल सैम अमेरिका वाला, वो $9 बिलियन का ऑर्डर इनके चक्कर में छोड़ देगा? उस बंदे के चक्कर में भी जिसका पता भी नहीं उसका नाम रवि शर्मा है कि निज्जर है, उसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। बात कुछ नहीं, उसका पहाड़ बना लो आप। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, लोगों को पता लगना चाहिए ये बंदे कौन है, इनकी रियलिटी बाहर है। ये जो ड्रामे करते हैं कि हमने लंगर खिलाया, तो एक तो खिलाने के बाद जो इतना सुना देते हैं बंदे को वो हजम भी होता होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो दुनिया इतनी, इवन पाकिस्तान, आपके सामने एग्जांपल है यार, पाकिस्तान ने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। वो लिस्टें किसने दी थी इंडिया को? किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पाकिस्तान में? Yeah, you're right, Karan. I हाँ, think बेनजीर भुट्टो, we need to बेनजीर भुट्टो। move. Yeah, हाँ yeah, भुट्टो we need to. वो Yeah, देखो सिद्ध भाई, एक स्टेट बिटवीन स्टेट दो अलग चीजें होती है। एक कम्युनिटी वो लंबरदार, ये लंबरदार कनाडा के थोड़ा बन जाएंगे, या तो ना अच्छा बड़ी। करण भाई, हाँ, हमारे साथ जैसे जैसे चाचा जी सिद्ध भाई भी देखो, बैठे हुए हैं, से भी हमें पूछना है कि भाई एक उनका लास्ट चीज, एक लास्ट थिंग, आई नो इट्स रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग। देखो जो जिसको कहते हैं ना कि अपना लोहा मनवाना, वो यहूदियों ने मनवाया। कनाडा की पार्लियामेंट में इन्होंने वो एक यहूदी, सॉरी, एक वो नाजी लेके आए, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया। आज ट्रूडो ने माफी मांगी है। इसको कहते हैं लोहा मनवाना। लाइक नो, उनकी छोटी सी स्टेट है इजराइल, उन्होंने आगे ला रहे हैं सारे। थैंक यू। या मैं एक छोटा सा कमेंट पास करूंगा बिफोर वी मूव टू मेहता साहब।
देखें करण भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो नाची वॉर क्रिमिनल था, उसकी जब बात की है, ही इज अ कन्विक्टेड वन, ही इज अबाउट नोन वन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स. और यहाँ पे व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, यहाँ पे करीमा बलोच का एक कमेंट आया था, और वो कमेंट क्या आया था कि नोबडी एवर फाउंड आउट एट देयर कल्प्रिट्स. उसकी ऑफिशियल रिसर्च और उसकी ऑफिशियल वर्डिक्ट आ चुकी है, एंड मे बी यू शुड गो एंड चेक दैट. जब इसकी भी आ जाएगी तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफिशियल वर्डिक्ट, whether people think there was more to it or not. But what is official is official. और करीमा बलूच का official verdict आ चुका हुआ है. There is no further investigation. So I don't think we should be mixing the two issues. That's point number one. Secondly, somebody stated कि कुरान के अंदर ये लिखा है, हमने वो कमेंट भी यहाँ पे दिखाया भी था और शेयर भी किया था, इट इज अ प्रॉब्लम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट. आज ये यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं, परसों ये भाई साहब कल को किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर आ जाएं जो पब्लिक के अंदर है या कोई और जगह पे है, दैट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक. Just like that's not going to be good for from whatever community this person is representing. That will show fascism. दुनिया के अंदर 1/3 of the globe's populace happens to be Muslim, right? और अगर वो सारे ही इस जिस जो ये कह रहे हैं उस तरीके से बिलीव करते होते, we would be living in a very different world today. तो इंसान को सोच के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है. और फिर why I associated certain things with RSS is I don't think I need to elaborate, everyone knows. तो हमारा तो बहुत सिंपल सा ये है ना, हम इस्लामिक मुसलमानों के अंदर से जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करते हैं, ना हम हिंदुइज्म के अंदर से जो एक एक्सट्रीमिज्म निकल रही है उस ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं. एटलीस्ट मैं नहीं करता. Or if we can call our own people out who happen to be Muslim extremists in regards to that, and we don't adhere to that, and we have suffered from that, then we will have no qualms in stating कि हिंदूज जो हैं उनके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो एक्सट्रीमिस्ट सोर्सेज कौन सी हैं. While the channel will expand, we'll cover that topic in detail as well at some stage. तो लेकिन शाहजी, आप जब ये कहते हो ना पर कि मैं तो पहले पूरी बात, आप कंपैरिजन जब मैं एक सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूं. Right now, what we're talking about is Pannu. Pannu's statement cannot be justified. It is nothing but fascism. It is full of Hindu hatred. It is what I would refer to as Hindu phobia for all Canadians who are living in Canada. And that is the important point here. We are not here to today discuss कि आप लोगों का ओपिनियन इस्लाम के ऊपर क्या है या करीमा बलोच के ऊपर क्या है. We have shown you a video. We are asking you what your comments in regards to that are. And the more important question is, Pannu fit to represent that community? Is somebody like that even going to accept other Sikhs as Sikhs who don't agree with him? And if a state like that, with that kind of a mindset, is created, how will it be any different to ISIS? These are a few questions. So sorry, आपको मैंने wait करवाया. मेहता साहब, you're our Uh, guest. Please comment. yeah, Please go ahead. नहीं Shaji, कोई बात नहीं. before आपकी Mehtaji, just a small comment. I don't know. It's about the video because we might move ahead from the video and the discussion. I don't know who Pannu actually is because this is the first time I'm hearing about Pannu. But जो मुझे समझ आया है, what Shah and Karan said, I agree totally. But such events give a sort of a space to people like Pannu to spew hate. और वो मुझे लग रहा है इस तरह के इसके पुराने भी statements होंगे. It might be conjecture, but I think people like him
इनकी हिस्ट्री होती है to say such things and then Furkan bhai, this work. is the same guy who was the orchestrator and architect of the referendum Seeks for Justice का ये main leader है. He's one of the founding people. So Yeah, from there you can like understand the yeah, entire Khalistan movement right now yes, is on behest of him. yes. Yes, the first statement that we heard on the floor of the house, जो उन्होंने दी, I think that was a more stable statement, calling for justice of the murder of a certain individual. I think, but calling for all Hindus and a community to leave America or Canada, it doesn't make any sense, and it should be condemned to the fullest. The same way, an extrajudicial killing of an individual should also be condemned. We are discussing uske ramifications internationally, diplomacy पे क्या होंगे, but overall I think both incidents are bad. Equally, I don't know, but they should be condemned at least. Ji Mehta, your comment, please go ahead. थैंक यू जी। शाह जी, बस आप इसके बाद तो मैं इस चीज़ के बारे में तो बात नहीं करूँगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो टॉपिक आपने रखा है उसके ऊपर ही बात करनी चाहिए और कंपैरिजन करने आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर आरएसएस टू एनी ऑफ दीज टॉपिक्स एट द मोमेंट। रही बात, अगर ऐसे कमेंट देगा तो कैसा स्टेट खड़ा रहेगा? भाई ऐसा कमेंट देगा तो थियोक्रेटिक स्टेट ही ऐसे कमेंट्स देते हैं ना। The states that are made on the basis of a religion, those type of people would make that type of comments. उसका अगर आप ढंग से सुनो तो बोलते हैं कि all Canadian Hindus, you have gone against the Canadian Constitution. Clearly, that's a silly comment. That's the first thing. Silly person will make a silly comment, obviously. लेकिन इसके विपरीत, यानी कि इसके ऑपोजिट में एग्जैक्ट सेम इमेजिनरी तराजू में उसको भी तोल सकते हैं कि भाई तुम रह रहे हो कनाडा में। हमारे एक चंग जी हैं जो आज एक ट्वीट किया था, मैं फॉलो करता हूँ उनको। उन्होंने ट्वीट किया, तुम भी तो रहते हो कनाडा में, तुम भी तो कनाडा का खाते हो और वहीं पे तुम गंद मचाते हो, वहां पे तुम ट्रैफिक रोकते हो, वहां पे तुम टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हो, वहां के लोगों को बम से उड़ा देते हो एयरप्लेन में, वहां के लोगों को मजबूर करते हो कि उनके प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करते हो, उनके पार्लियामेंटेरियंस को मजबूर करते हो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप खराब करें। तो ये द सेम थिंग अप्लाइज टू पन्नू एंड हिज इल्क। When you are sitting in a country where it has got nothing to do with Bharat, it has nothing to do with Pakistan, it has got nothing to do with the imaginary country that you want, the imaginary theocratic country that you want, that is Khalistan. That country has got nothing to do with these things. वहां पे बैठ के गंद क्यों मचा रहे हो? And he draws a beautiful parallel with the LTTE terrorists as well. कि इतना बड़ा तमिलनाडु उनके पास पड़ा है और फिर भी उनको श्रीलंका में जाके गंद मचाना था। आई एग्री विद दिस पॉइंट। इतना बड़ा पंजाब इनके पास है जो पूरा पंजाबी बोलता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर देयर इज अनदर पंजाब दैट इज विद पाकिस्तान, वो भी पंजाबी बोलता है। तुम्हारे पास तो टू सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग कंट्रीज है। यहां तक कि तुम्हारे पास कनाडा भी है। सरी अपना क्या नाम है उसका, ब्रैम्पटन, पंजाबी स्पीकिंग। गिव इट अ फ्यू मोर इयर्स, इट विल हैव पंजाबी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट लाइक इन क्यूबेक यू हैव फ्रेंच एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इतनी जगह होने के बावजूद, इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद, तुम किसी और कंट्री में, जैसे एलटीटी ने श्रीलंका में गंद मचाया और इतने लोगों को मारा, उसी तरह ये वही करना चाहते हैं कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। जो कंट्री इनको पनाह दे रही है, जो कंट्री इनको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि तुम यहाँ पे आके रहो, contribute to the society, contribute to the exchequer, live a happy life, educate your kids,
जो कंट्री उनको पनाह दे रही है वो उसी कंट्री के अंदर गन मचा रहे। आई लिव इन यूरोप, एक छोटे से टापू में रहता हूँ, आयरलैंड, और इतने छोटे से टापू के अंदर भी मैं देखता हूँ ओकॉनल स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट इन डबलिन, जिसके आप अगर जीपी और जनरल पोस्ट ऑफिस देखोगे, उसके ऊपर आज भी गोलियों के निशान है। जब 1916 अपराइजिंग हुई थी आयरिश फ्रीडम की ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसकी गोलियों के निशान भी अभी मौजूद हैं जनरल पोस्ट ऑफिस पे, जीपीओ पे। उसके सामने खड़े होके ये ऐसे गंद मचाते हैं, धरने देते हैं। तो भाई, there is nothing serious to be taken out of the cartoon that makes those type of comments. Those comments can only come from a guy that is expecting a theocratic state. That's the point. बाकी Okay. कंपैरिजन तो है ही नहीं, इंडिया और खालिस्तान की तो कंपैरिजन है ही नहीं। इट्स लाइक you're comparing cricket with tiddlywinks. Cricket is a sport, tiddlywinks is an imaginary, or quidditch to that matter. Okay. Thank you, Mehta. But I think some of your points are no different than the video में जो वो पन्नू साहब कह रहे थे, क्योंकि you're also talking about the whole community living in certain countries. Individuals पे बात हो, that would be making Sorry, some I I sense. I, I did But not mention. I don't think I mentioned any community. I said I did not mention Sikhs. I did not mention. I mentioned Khalistanis. I mentioned the LTTE terrorists. I mean Khalistani terrorists. That's what I mean. I don't mean Sikhs. And that's not the point. चले, ठीक है. I think we have two more speakers. Golden words, आपने कुछ कहना है? Yes, definitely. I just came now, so I don't know. I might repeat whoever said whatever. So, but whatever I heard about these people and going on from many, many days or years now. So now it is fueling through the governments and all. It's not a good way. Especially governments shouldn't involve in such things, but now the Canadian government are involved, so it is not good for them actually. So that's what I mean, because I am a proud Indian staying in US. So it matters a lot. This type of thinking is not good for anyone. If you uh, you know if you have a snake in your backyard and you are training it to bite others and your neighbors, definitely it will bite you one day. It's a snake, end of the day. So that's what I believe. So when you are playing with the fire, you will get that heat too. So they should stop this all. How much and stop spoiling all the youngsters. Especially I love Sikh people because they are the best, not Khalistanis, and who have that mindset. I definitely don't adore them, but I adore the Sikh people because that I know they are the base. They are actually the Hindus, the eldest sons who became the warriors back in time. So they are not anything different from our Sanatan Dharma. They are not anything other from our Hindus. They are Hindus. They are just a panth. It's a panth. It is not a religion. It is not different from anything different from our Sanatana Dharma. It is a part of us. They are a part of us. And whoever is spoiling their minds, um, bless them. They shouldn't do that. And we as a Indian people, never Bharatiyas, we never let them to, be apart. Like we don't let them to get apart from us. That is for sure. And whatever the leftover, these people, it will calm down one day. It's just little here and there fire. It will come down. Not to worry. That's what I feel. I'm sorry. There is also hello, Golden Virgin. Namaste. There's Namaste, also Netaji. Devi ji. I think is sitting in the stream as well. There's Hello. something wrong. Sorry.
I think Devji got disconnected. So, Okay. okay. So, if we can go to GKM, if you have a comment. Oh, Devji is here. Devji, please go ahead and Thank then you. GKM. Okay, ठीक है, thank you. So, two things I want to touch base on. One is the Khalistanis and the Jagmeet Singh. Somebody spoke about Jagmeet Singh. Now, Canada can have their own version of who the Khalistanis are, but the Indian version is that they are terrorists, they are criminals. You know, the leadership is basically promoting terrorism. That is reflecting in their protest. जो वो I'll speak in Hindi. जो वो protest करते हैं उसमें उनकी violence reflect होती है. वो तलवारें दिखाते हैं. वो ये दिखाते हैं कि हमने proudly इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारा है. You know, these are the things which shows that they promote violence. अब दूसरी बात है जगमीत सिंह की. नाउ जगमीत सिंह इज अ एनडीपी लीडर. एनडीपी जो वहाँ की पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी को भी सपोर्ट करती है टू बी इन द पार्लियामेंट एज अ मेजोरिटी गवर्नमेंट. जगमीत सिंह जो है ही इज फ्रॉम अ खालिस्तानी आइडियोलॉजी. वो जब एनडीपी के लीडर थे, जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो तब भी इस चीज को ओपनली सपोर्ट करते थे. वो इंडियन गवर्नमेंट को हुकूमत कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये जालिम है हुकूमत. नाउ इमेजिन a leader of a political party in a democracy is accusing another democracy without any evidence. ठीक है, ये तो पहली बात है. अब दूसरी बात ये है कि ये एक डिफरेंट अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं. कौन सी जमीन पर? पंजाब पर. अब ये देखा जाए कि क्या पंजाब इनका है इन रियलिटी. ये कहाँ से आए, ये अपने आप को एज द पंजाब लैंड कैसे क्लेम कर रहे हैं. पंजाब सिखों का नहीं है. सिखों का इन द सेंस व्हेन आई से सिखों का, सिर्फ सिखों का नहीं है. पंजाब हिंदूज का भी है. हिंदूज जो हैं वो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं. और अगर हिंदू इतने ब्रूटल होते तो सिख पंथ एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं. आज सिख मेजोरिटी हैं क्योंकि मेजोरिटी हिंदू परिवारों ने अपना बड़ा बेटा सिख बनाया. मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे उनका बड़ा बेटा सिख बनता था. छोटे बेटे हिंदू रहते थे लेकिन बड़ा बेटा सिख बनता था. अभी भी मेरे परिवार में बहुत सिख फैमिलीज हैं और ये कारण है इस चीज का. सो ये बात तो ये इनकी यही डिबंक हो जाती है कि जो हिंदूज हैं वो इन पे जुल्म ढाते हैं, यू नो, गवर्नमेंट इनको तंग करती है. ये सब एक रिटोरिक है, क्योंकि ये रिटोरिक तब शुरू हुआ जब जट जो एक कास्ट है जट सिखों में, जब इन्होंने सिखिज्म को टेक ओवर किया. पहले सिखिज्म वाज ऑल अबाउट लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति. यू नो, मिशनरी काम भी करते थे पर लोग खुशी खुशी अपने बच्चों को सिख बनाते थे. जब से जट्टों ने टेक ओवर किया है तब से इट्स ऑल अबाउट वायलेंस. इट इज ऑल अबाउट अ सेपरेट स्टेट. एसजीपीसी जो इनकी है आप देख लो, उन्होंने कभी इस चीज को कंडेम नहीं किया. आज तक जो वायलेंस हुई है पंजाब में या भारत से बाहर, उस चीज को कभी कंडेम नहीं किया गया है. एंड दूसरी बात है कनाडा की कि आपको एविडेंस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से that these people are the convicted criminals. You know, हमने इन पे केस चलाए हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जो वहां से भागे हुए हैं. एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी को और क्या प्रूफ दे सकती है, आप मेरे को बताओ. एक आदमी को पकड़ा गया, उसके ऊपर चार्जशीट हुई, फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट में केस चला, दोनों तरफ से सुनवाइयां हुई, फिर ये जब वो उसको क्रिमिनल बताया गया, उससे ज्यादा बड़ी चीज आप क्या किसी डेमोक्रेसी को दूसरी डेमोक्रेसी को प्रेजेंट कर सकते हो. उसके बाद भी ये लोग मानने को रेडी नहीं है. तो उनके कुछ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं. इंडिया शायद पता नहीं ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, पर फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, सिख्स आर डिफरेंट फ्रॉम द खालिस्तानीज. दैट्स ऑल आई वांट टू से. Thank you, Devji. I think we have other speakers as well. But Sid, what's next on SlideShare? Next on the slide here would be yeah, these were the two slides that we were going to focus on, and then we were going to take it to the audience. There Okay. is something regards to Khalistanis. Well, again, Devi ji said it better. The Indian side just says that Khalistanis are, well, they are not a referendum or it's not a democratic process. They just call them terrorists. So
These are the only thing. However, the Indian media is asking for the Canadian Prime Minister to react to Pannu Sahib's, well, quote unquote, threat. Uh, I can play that, but I think Devi ji has elaborated and Karan Bhai has elaborated on that as well. So I Okay. think it's So, better that we take okay. the audience. Yeah, we'll move to GKM. Are you there? Do you have any comments? जी 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 सभी लोगों को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। प्लीज गो अहेड। जी सभी पैनलिस्ट को नमस्ते और सभी दर्शकों को भी नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। सत श्री अकाल। ये जो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है, तो इसका इतिहास हम सभी लोगों को पता है, और जिन्हें नहीं पता है उनको थोड़ा खालिस्तान मूवमेंट के बारे में जानना चाहिए कि 1971 के वार के बाद मैं ब्रीफ वो टाइम दूंगा 2 मिनट का। 1971 वार के बाद जब पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान ने एक तरीके से कहें तो इस्लाम हारा पाकिस्तान के साथ, तो इसके बाद इन लोगों ने फिर परमाणु बम बनाया, और उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर का जो है फेमस कोट कि हम हिंदुस्तान को 1000 घाव देंगे, वो सब पॉलिसीज के तहत इन लोगों ने यहाँ एक मूवमेंट खड़ा किया, और उस समय बड़ी लिबरल पॉलिसी थी अपने इंडिया की, बड़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी, और इसका गलत फायदा उठाया इन लोगों ने और एक मूवमेंट खड़ा किया, उसको बाकायदा खाद पानी दिया, हवा दिया, आग में घी डाला। और मेरा इस पर ये कहना है कि जैसे पाकिस्तान, पाक शब्द उर्दू शब्द है, तो उसी तरीके से खालिश शब्द का भी मतलब प्योर होता है, पाक का भी मतलब प्योर होता है। अगर पैनलिस्ट मुझे मेरी बात गलत लगे तो मुझे जरूर सही कीजिएगा आप लोग, कि जो मैं कह रहा हूँ वो कहाँ पे गलत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सही करें। तो खालिश का मतलब भी वही होता है। तो पाकिस्तान से इन लोगों ने खालिस्तान बनाया। मेरा जहाँ तक मानना है कि खालसा पंथ से इनका कोई संबंध नहीं है। मेरी अगर जानकारी अधूरी है तो आप लोग करेक्ट करना मुझे। तो खालसा पंथ से इनका कोई संबंध नहीं है, और वो गंध ये पंजाब में डालने की कोशिश किया, और उसी के तहत खालिस्तान मूवमेंट को इन लोगों ने हवा दी। फिर उसके बाद सारे घटनाक्रम हमारे सामने है। जो खालिस्तान लीडर था उसका नाम क्या था, गोल्डन वॉर, इस समय नाम मैं भूल रहा हूँ। भिंडरेवाल की बात कर रहे हो आप? हाँ, भिंडरे वाला जी। उसको इन लोगों ने खड़ा किया। कुछ इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स भी उसके लिए जिम्मेदार थी। हम जो है सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और उसके बाद उसकी हत्या के बाद जो है फिर फिर रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई। तो फिर से ये मूवमेंट अब ये भारत में नहीं हो रहा है, इसको कनाडा हवा दे रहा है। और कनाडा और चाइना की जो है, मुझे ये भी पता चला है कि ये दोनों देश जो है कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं। कनाडा की भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कनाडाई गवर्नमेंट को, उससे पहले मैं एक और बात कहूँगा कि अभी निज्जर की हत्या हुई और कनाडा की सरकार इतनी ज़्यादा उग्र हो गई, व्याकुल हो गई, लेकिन कनाडा की सरकार को जवाब वहां भी देना चाहिए जब इन लोगों ने ये कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के समर्थन में इन लोगों ने उसका बाकायदा जुलूस निकाला। तो इस पर भी जरूर कनाडा गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, सफाई देना चाहिए। वहां से आपके पन्नू जो है, अभी इस पैनल में पन्नू साहब कहा गया, आई एम डिसएग्री कि उस पर्सन को जो है साहब से की उपाधि से नवाजा जाए। पन्नू जो है विभिन्न समयों पर भारत के खिलाफ हरकतें करता है, आग उगलता है,
और भारत के खिलाफ आईएसआई को सपोर्ट करता है, आईएसआई भी उसको सपोर्ट करती है। तो अगर आपको खालिस्तान से इस जी भाई साहब, आप ठीक हैं? जी जी, मुझे म्यूट किया गया था। नहीं, जी आप वो इतने पैशनेट हो गए थे, मुझे लगा आप गिर गए हैं कुर्सी से, काफी नहीं आवाज वो आ रही थी। आई थिंक इट वाज रुपेश जिनकी बैकग्राउंड नॉइज थी। जीकेएम प्लीज गो अहेड, आगे बोले। जी और तो मैं जी जी यही कहना चाहूंगा कि कनाडा की गवर्नमेंट से इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, कि भाई आप लोगों को अगर इतना ही हमदर्दी है खालिस्तान से, तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आपकी एरिया के मामले में, तो आप वहाँ एक खालिस्तान बना लें, उनको एक जमीन दे दें। ये हमारा कहना है कनाडा की गवर्नमेंट से। बाद में मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं प्राइवेट चैट में मेंशन करूंगा। जी थैंक यू। नहीं, मेरा आपसे एक एक क्वेश्चन है कि आप जब ये बात कहते हैं कि वो अपनी ही एक कंट्री कनाडा के अंदर ही बना लें और हमदर्दी है, बट देन अगेन एवरीवन's गॉट द सेम फ्रीडम टू स्पीक इन दैट कंट्री। अभी देखें, जब पन्नू ने वहाँ पे, पन्नू साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट हिंदूज बाय बीइंग अ हिंदू फोबिक, तो उसका रिजल्टेंट भी तो वैसा ही आया ना, उसको भी तो बैकलैश मिल रहा है। आपको नहीं लगता? No, 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 no. Don't. डोंट यू Yeah, yeah. थिंक कि No, अगर no, कुछ no. लोगों का Who ये is ओपिनियन this है, वो speaking? कहीं पे भी हो सकता है, Who is this किसी भी speaking? जगह के बारे में हो सकता है, देर entitled to that opinion, does that mean that country should basically give them space and land? That doesn't make no sense. इसी तरीके से जब इसी तरह बहुत सारे इंडियन इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तानी इवेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया के इवेंट्स होते हैं उन कंट्रीज के अंदर, कुछ आपके हक में होते हैं, कुछ आपके हक से बाहर होते हैं, है ना? तो अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे करीमा बलोच के बारे में बात करते हैं, जब बलोचिस्तान के प्रोटेस्ट होते हैं, दे आर देयर देयर आर वेरी सिमिलर स्टेटमेंट्स पास्ड अबाउट दैट एज वेल। ठीक है कि रॉ उनको सपोर्ट कर रही है, दे आर एंटी नेशनलिस्ट, जो आप इनके बारे में कह रहे हैं वही बड़ी बातें आप उनके बारे में भी कह सकते हैं। So जी मैं बोलूं। I think it's a very unfair thing to state कि एक तरफ आप सपोर्ट करें और दूसरी तरफ आप जब आपकी कंट्री के खिलाफ हुए तो you have a different stance. Doesn't work that way. They can't do that. उन्होंने तो एक तरीके से सोसाइटी को रन करना है। आप जी मैं समझ रहे बोलूं हैं? कुछ। जी जी जरूर। जी आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, सो इसलिए मुझे आपकी कुछ बातें समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी जो समझ में आया मुझे, मैं उस पर बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि जैसे आप उन्हें कह रहे हैं कि आप खालिस्तान अपने देश में बना लें, तो बलोच मूवमेंट जो चल रहा है, इस तरीके से बलोचों के लिए भी उनको अपना जमीन देना पड़ेगा। हिंदुओं पर भी आपने कुछ बात कही, और आपने कहा कि अगर कहीं किसी देश में निर्वासित सरकार चल रही है, तो फिर उस देश को उस निर्वाचित सरकार के लिए एक जमीन देनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा ही आपने कहा? जी नहीं जी, मैंने इस तरह का नहीं कहा, और मुझे आपके आखिरी वर्ड का समझ मुझे भी नहीं आया। नारवासिक का क्या मतलब होता है? निर्वासित। जी गोल्डन वर्ड्स प्लीज, अगर कोई हिंदी और इंग्लिश कॉमन समझने वाले हो तो। एनीवन ऑन द पैनल कैन ट्राई ट्रांसलेटिंग गवर्नमेंट दिस इन इन एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, गवर्नमेंट इन निर्वासित। एग्जाइल। ओके ओके, सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। देखें, गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक कंट्री के अंदर हर तरह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेरियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और सेलेक्टिवली हम एक को रोकें और दूसरे को ना रोकें, वो सही बात नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब आपको समझ आई?
उसके अलावा शाहजी एक और भी चीज़ है ना, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, प्रोटेस्ट्स आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जहाँ पे डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई होती है वहाँ पे प्रोटेस्ट और लोगों का एज अ कलेक्टिव अपने ओपिनियंस को शेयर करना, अपने ओपिनियंस को वोकलाइज करना, अपनी बात को बाहर सड़कों पे लेके आके बयान करना, वो उसका हिस्सा है। जहाँ भी बिल्कुल उनको इस चीज की इजाजत मिलेगी वो वहां पे ही करेंगे। अब खालिस्तानी इंडिया में जाके इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको गोलियां लग जाती हैं। तो भाई आप मेरे उनको टेररिस्ट मैं कहें, बस जो एक मर्जी कहें, अगर आप पर उनको कहें कि वहां पे जाके गंद कर रहे हैं तो ठीक है, आप उनको वो गंद इंडिया में करने देना, गोलियां ना मारे। सिर्फ एक नहीं, बात बता दूं गोलियां मैं आपको। मारा भी नहीं है। कौन बोल रहा एक है? एक सेकेंड एक सेकेंड। मैं बोलूं? आई थिंक जेकी हम आपको एक बार चांस मिला। आई थिंक आर्यन ने अभी कुछ नहीं बोला, उनके पास जाते हैं, देन आई कैन कम बैक टू यू। मैं ये सिद के कमेंट पे कुछ बोलना चाहूंगा जरा। अच्छा, गोलियां मैं नहीं, मैं बस जी, एक ही चीज बोल देता हूँ कि मेक भाई इट ब्रीफ, एक मेक इट ब्रीफ खुला मैं था। जी, वेरी क्विक एक खालिस्तानी ओपन खालिस्तानी सपोर्टर, हिज नेम इज सिमरनजीत सिंह मान, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he was given the opportunity to run an election, win the election, and get a seat in the parliament. तो गोली मारने की बात जो है ना, और पीसफुल प्रोटेस्ट की जो बात करते हो, वो तो कनाडा में भी नहीं चलता है। वो वी हैव सीन व्हाट हैपेंड टू द ट्रकर्स प्रोटेस्ट। सो यू नो देयर नीड्स टू बी काइंड ऑफ ए लाइन टू बी ड्रॉन कि भाई तुम्हारे यहाँ पे अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको कड़ी निंदा करेंगे गवर्नमेंट की, लेकिन उनके यहाँ पे ट्रकर्स प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके अकाउंट जब्त कर देंगे। सो इट्स नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज इट सीम्स। दे आर नॉट, वी नॉट टॉकिंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई फ्री स्पीच नहीं होनी चाहिए। वेरी, इट हैज टू हैपन। 295A होता तो बाबा नानक नहीं होते। 295A भारत में होता तो गौतम बुद्ध नहीं होता। All of these people would have not existed if 295 was existing in Bharat. So freedom of expression, freedom of protest is all well and good, lekin it doesn't work like that in Canada, especially not for the truckers. And as for the Khalistanis, an open Khalistani supporter, Simranjit Singh Maan from Shiromani Amritsar Dal is actually an MP in India, member of parliament. That's all I wanted to say. चले, थैंक यू मेहता। आई थिंक आर्यन मैं गोस्वामी, इस पे एक योर एक बात करना चाहूँगा। जी जी देखें मेहता साहब, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर 90s के अंदर और उससे पहले 80s के अंदर ठीक ठाक टेररिज्म हो रही थी, उन सारी चीज़ों की फंडिंग जो है वो कनाडा और यूएस से आयरिश डिसेंट के लोग बड़ी ओपनली उस IRA को सपोर्ट करने के लिए उन टेक्सन टी पार्टीज के अंदर रेज Correct. करते थे, एंड अ लॉट ऑफ दोस पीपल वर बेसिकली part and parcel of the American as well as Canadian political system. Correct. Yeah. De इस Valera हाँ was De Valera, the first prime minister. कहने का मेरा मकसद क्या है, why I basically added that in is के even though Britain in those days had huge issues with what was happening across the pond, लेकिन they could not stop that. तो इस चीज को आई अंडरस्टैंड कि इंडियन लोगों को रिजर्वेशन जरूर हो सकती हैं इस बारे में, लेकिन इस चीज को आप क्राइटेरियम बना के अनफेयरनेस नहीं कह सकते, and that is why I brought that up. Shahaji, they needed Bill Clinton to actually sign the Good Friday Agreement. A third party, someone from the US, to step in for Bertie Ahern and all the other boys in Northern Ireland to sign the Good Friday Agreement. भारत में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं वही कह रहा हूं कि सिमरनजीत सिंह मान, an open Khalistani supporter, is actually a member of parliament without a foreign intervention. How good is that? ये आप सोचो ना। आपकी बात मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि भाई यूएस ने और कनाडा ने IRA को सपोर्ट किया था। आई एग्री विद दैट। So anyone 100%. can be a But Khalistan, without anyone can be a Khalistan supporter or whatever supporter
in any country, and also be They a are member of in India. parliament. I In don't see भारत, any. अरे भारत में है वो बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे भाई. I'm not talking about Canada. हाँ, मैं तो वहां भारत पे की तो बात वो कर रहा हूँ. माइनॉरिटी के अंदर है. You're talking about one How person. can no no You're sorry speaking he about one person. sorry let me just finish. He stood for an election with this in his agenda. Okay, उसका जो एजेंडा था ना, उसके बेसिस पे उसने संगरूर में इलेक्शन लड़ा है और वो संगरूर से जीत के आया है. There is one person at the moment. It does not लेकिन require a Bill अगर आप Clinton. उसकी आप समझ नहीं ये रहे. Okay. लास्ट ईयर की बात है ना, ठीक है, when he was elected. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप उस सारे सिचुएशन को देखें, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ खालिस्तानीज आउट देयर. देयर इज अ डिफरेंस. You have to understand. शाहजी You have what you have to understand कि there are factions even between खालिस्तान, even though there are minority. खालिस्तानी और खालिस्तानी के अंदर भी फर्क है. ऑफ कोर्स. शाहजी, मैं ये कह रहा हूँ आपको, वो पहली बार इलेक्शन जीता है. शिरोमणि अकाली दल अमृतसर साडा, जो उनका ये है ना, जो लंबी तलवार वाले जो भाई साहब हैं, सिमरनजीत सिंह मान. He has been running for election, running for a seat for the past 15 years. ये पिछले साल की बात नहीं है. हर साल उसकी जमानत जब्त होती थी मेरे भाई. What I'm saying is, we did not need a Bill Clinton to afford him an opportunity to run for an election. Okay, वो उसको बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. भारत में ही एक ओपनली खालिस्तानी बंदा है जो MP बना बैठा है. So don't ever bring up. Sorry, you can bring up whatever you want to bring up, but that comparison does not exist. भारत के अंदर वो comparison हो ही नहीं सकता, because that opportunity is actually provided to them. Openly Balochistan supporter cannot. I'm not sure. You can correct me if I'm wrong. But if there's a guy who says, I want free Balochistan, but I also want to run elections in Pakistan, I'm not sure what sort of outcomes they will get. So नो मेहता जी, ये तो प्रोविड नहीं है. वहां पर काट देते उसको. yeah, I don't. सिर्फ It's सपोर्ट की sorry. तो I थी, should not have. उसको काट नहीं, I देते. should not bring. I should not have brought it up. एक सेकेंड. मेरा ख्याल है कि what you need to do जी is मैं कुछ बोलूं? इसका छोटा सा मैं आपको जवाब देता हूँ. इवन दो बलूचिस्तान इज नॉट द सब्जेक्ट. हेलो, एक काम करें, बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनमें कितने पॉलिटिशियंस हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये आप ऑनलाइन खुद ही सर्च कर लें. और उनमें से कितनों को काट दिया गया है, ये भी आप खुद सर्च कर लें. भुक्ति साहब की केस के अंदर एक सिचुएशन थी. दैट इज अ सेपरेट थिंग. वरना पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ओपनली, खाली बलूचिस्तान के अंदर क्या, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सेपरेटिस्ट माइनॉरिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और सिंधु देश वाले भी करते हैं और उनकी पार्टीज ओपन है और एकेडमिक सर्कल्स के अंदर भी वो जाके ओपनली गुफ्तगू कर रहे होते हैं. अब अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. Thank you. Thank you. I'll read. जरा उन GKM जी बोलो. देखें और ये भी देखें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से कितनी दफा कौन जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को रन और रिप्रेजेंट कर रहा था, वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली कब 1947 से अब तक. Karan, sorry, I need to talk here. So better not to go to Khalistan to Pakistan. I don't want to go there. I don't want to listen much of the there. That was my So mistake. better you That talk was my about mistake. don't please. Yeah. This is not a topic of Pakistan, and we are not going to talk about Pakistan देखें here जी, at all. Because Pakistan in wait. When you guys are talking, I'm not talking at all. Please, you are Please go ahead. in here in everything. Please go ahead, Golden Words. Please go ahead. I don't know. Because I'm in phone, I cannot see properly who is talking, and I cannot name you guys. But you guys are in the one who's, I don't know what his name. His name is Shah. I think he's talking even, and when he is talking, we are not talking. We are not disturbing him at all. Can you and continue with the conversation, please? I am sorry. Please, I know. Please. Okay. When I'm talking, you don't even talk, saying that please. Yes, and all, I please. won't speak. I know. Can you please continue? Yes, please. Quiet. Can you please And when continue? I'm talking, please. And Thank can you. you be a bit civil? No I shushing am. here.
I Yes, am. can You we are. get on with the subject Okay, now? guy, Tarun, please come in जी with. जी मैं कुछ Gold, बोलना He's not चाहूंगा letting please. talk to everyone, but he's talking every time. When I am talking, that time Golden he don't words, let us to please talk at move all. ahead with the please move ahead with the conversation. Yeah, Enough. yeah. That's He's what I on mute. wanted to do Yeah, please because go ahead. he. Please go Yeah, ahead. yeah. Please go Because this ahead. is. Yes, I I am. I hope am. I you am. I am. I I hope am. you do it Enough. today and not next week in next week's show. Please go ahead. Okay, so this is not a topic of Pakistan. So better to talk about everyone who, because we want much more information from a common man or the person who knows about the Khalistan very well. And we know much more about the Khalistan, yes, but better not to divert the topic, please. Yeah, thank you. Thank जी you, जी Golden Words. जी, मैं GK, फरहान GK, भाई एक चीज ऐड करना जी, चाहता हूँ कि ये I think it was not me who brought Pakistan in and that was the whole point. मैंने तो इतनी जब किसी ने यहाँ पे कमेंट पास किया कि पाकिस्तान में तो काट देते हैं तो it is my right to basically state कि आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर जो डेजिग्नेटेड लोग हैं जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर हैं फ्रॉम ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ द फिफ्थ वन उसके अंदर से आप जाके देख लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंक्लूडिंग पीओके के अंदर से जो कई हैं उसके अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएंगे दे ऑपरेट वेरी फ्रीली नॉट जस्ट इन द पार्लियामेंट बट इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बट आल्सो इन एकेडमिया ठीक है इश्यूज जी होते जी हैं तो दैट्स मैं व्हाट I brought to attention so I hope it is clarified for everyone and it's a Google search away जाके check जी, thank you, Shahji. अच्छा, GKM, wait a second. We have two more speakers जिन्होंने नहीं बोला. I think Aryan Goswami, if you have something, please go ahead and make it brief. Thank you. Aryan. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्ते। मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ और आओ आओ भैला मैं आओ अपना आओ पोरबंदर જય જલારામ શું કહે તમે ઓલા છો ને આપણે પેલા મહિલા હતા ઈ હા ઈ જ છું કરો કરો વાત શું કરો કહે આપ કેમ છો મજામાં તમે વાત કરો जी, सॉरी जी, यार thank हाँ you. मैं गुजरात का आदमी देख जी, के मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ बोलो जी, thank you. All right, man. It's fine. I think Aryan, हिंदी या इंग्लिश इनमें आप बात करें प्लीज. हिंदी Go हिंदी ahead. हिंदी हिंदी हाँ तो मैं अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ पोरबंदर का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मेरे पड़ोस में एक सरदार जी रहते थे उनका 17 या 18 साल का बेटा था वो अपना टी शर्ट पहन के आया वो है ना भिंडरा वाले का तो मैंने उसको बुला के ऐसे बुलाया कि भाई इधर आ तू ये क्या पहन के आया है तो बोलता है कि ये तो हमारे आइडल है मैंने बोला कि भाई तू इसको उतार के आ अगर यहाँ कोई देख लेगा वैसे ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि इसने क्या पहना हुआ है लेकिन मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो भिंडरा वाले का टी शर्ट पहन के आया हुआ है तो मैंने उसको बोला कि इसको उतार के आ मेरे भाई यहाँ पे कोई देख लेगा तो तेरे ऊपर केस हो जाएगा या किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा ये तो एक बात रही अब मैं आपको ये जो खालिस्तानी है ना वो सबसे पहले मूवमेंट चलाया था अकाली दल ने ये जो अकाली दल है ना जो भी ये अपना पंजाब में है फिर उनका और ये जो अभी की भाजपा है वो पहले हिंदू महासभा हुआ करती थी उन दोनों का गठबंधन था और इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस की सरकार उधर कभी नहीं बनी थी आजादी के बाद इसलिए कांग्रेस को उधर सरकार बनाने के लिए कोई सिख मतलब कोई कट्टर कोई चेहरा चाहिए था और उसकी नजर में कौन आया ये जनरल सिंह भिंडरावाला शिरोमणि अकाली दल ने कट्टर सिख की बात की लेकिन उन्होंने कभी वायलेंस नहीं किया था और इस भिंडरा वाले को खड़ा करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत में और फिर क्या हुआ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अपनी गवर्नमेंट चलाने लगा वो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में फेडरल गवर्नमेंट उसको चलाने लगा उसके बाद वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि उसने वहां के कमिश्नर वहां के प्रेस रिपोर्टर उन सभी को मारना शुरू कर दिया जो उसके खिलाफ बोला उसकी हत्या हो जाती थी और
वो भी गुरुद्वार के बाहर ही मारा था उनको। तो अ, सबसे बड़ा हाथ इन लोगों को खड़ा करने में हमारे ही लोगों का है, और ऊपर से हमारे पड़ोसी भी, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और हमारा देश के वामपंथी जो हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए इन लोगों को खड़ा करने में हमारा ही बहुत बड़ा हाथ है। और अभी के जो हालात चल रहे हैं उसमें तो अभी अब पता नहीं कौन क्या गेम खेल रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी सर पे है। तो पता नहीं है अभी तो क्या ये उठक पटक करेंगे सब। अ, इतना ही कहना था मुझे तो बस। Ji, thank Thank you, you, Aryan. Aryan. Now we would move ahead with, I think it was Rupesh Jha, if I said it right. Rupesh, are you here? Yes, thank you for calling on me. So I would like to focus on the present situation of the fiasco between India and Canada. First of all, without beating around the bush, what is the present problem? The Prime Minister of Canada is accusing India of putting a hit on the head of Mr. Niger, though even the police has not conducted their initial inquiry and reached any conclusion. It seems to be totally politically motivated. I understand how the investigation works. First police files a charge sheet or something like that, we call it, and then they file a report in the court, and if and they identify the perpetrators of the crime, and then they go to a court and get a order to for arrest, and then they can go to Interpol to bring about a red corner alert. First you have to identify who pulled the trigger, and then you can move ahead to the second order, that who ordered or who. First, if you are not able to even identify who is the killer, then how are you going to accuse another nation of putting on a hit on it? So it is totally political. And now up to the bigger issue about the Sikh separatism and the Canadian politics. I want to tell you that it is not as simple. It is that during the Cold War, the Western country used to give shelter to the refugees from the Soviet bloc, or as they believe, from the third world countries which were sympathetic to the Soviet Union. And I'm a German national. I still remember that there were stories when the Sikhs used to come on a fake passport. They used to tear their passports, say Khalistan Jindabad, and they got an asylum in West Germany. And it was very easy to follow. And most of the thing, this Khalistan movement is a immigration scam, in my opinion. They just have to claim something that they have been beaten and something. And I have personally been to some of them. So because people don't know Punjabi, and so there were problems. So they claim that they were in somewhere Kashmir, they were beaten something. They said, why didn't you move to Mumbai or Delhi if you have problem there? So it was a very big scam, and West has accepted many criminals, like if you have seen the movie Scarface, where he comes from Cuba, criminal, and becomes a political fugist. That kind of thing West has encouraged. Since the problem is in the third world country, they are very keen to accept the criminal elements and put them as political. They have been political, and they know very well who these people are. Who was behind the bombing of Kanishka. In Kanishka explosion, so many, about 300 plus people were killed. But the father of the present prime minister, who was the prime minister at that time, Pierre Trudeau, he refused to hand over Talvinder Singh Parmar in 1984 to India. You know what was his pretext? Pierre Trudeau refused to extradite him to India on the specious plea that India, though a member of the Commonwealth, did not recognize the sovereignty of the Queen, who was Canada's sovereign. So you just can't, ignore the racism. White is right. What evidence has Trudeau given just now? Nothing. I say so. So I got some 5i means you have to present a. Even when Turkey accused Saudi Arabia of killing
Jamal Khashoggi, they gave some video evidence. They accepted that they have bugged the embassy, but they gave them. It is not possible that you can just make a claim and it's not in the legal process. One person accuses, second person accepts guilty or not, denies. Then the next step is you bring the proof to the table in the public. Okay, if he has some proof, he bring to the forefront. If he is not able to do that, it means it is a very grave problem. So it's a mix of lot of things. The first thing is that Western countries have a very patronizing behavior towards us, people from the who are not white, I will say. So they take in the criminal elements or under whatever pretext, and then they try to claim moral superiority. It is the thing. It is the main thing. Trudeau does not have any evidence, as far as I believe, because if that would have been, he would have started. And now we can say all the ifs and buts. He might have, if he had, he would have put it on the table, and he has not. And everybody is asking what is the evidence, what is the evidence, and he's showing five eyes, something central intelligence. It doesn't work in the legal circle. You have to give a clear evidence, which he has not been able to give. So till he is able to provide some evidence, I will say that he's lying and the whole case is bogus. And this whole Khalistani movement, which is not in Punjab right now, there is no problem. This is a big immigration scam. Thank you, sir, everybody. Thank you very much, Rupesh. Vielen Dank. And I think if anyone else has comments, I think GKM wanted to say something. GKM. जी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये शाह जी ने एक बात कही कि जो और भी मूवमेंट होते हैं तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर जब देखेंगे, मानवाधिकार जो चार्टर बना है, अगर उसके अनुसार किसी देश में किसी वर्ग विशेष के साथ या किसी क्षेत्र के लोगों के साथ कोई गलत कार्य हो रहा है और कोई देश उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर वहाँ की गवर्नमेंट इन एग्जाइल अगर उस देश में है तो इट्स ओके। जैसे कि तिब्बत की सरकार हमारे देश से चलती है और ये पूरी दुनिया को पता है कि तिब्बत पर चाइना ने अनैतिक अधिकार किया हुआ है और वहाँ के लोगों को के साथ माओ से तुंग के समय से या फिर अन्य समय से कितने अत्याचार हुए। लेकिन खालिस्तान की जब बात करते हैं तो पहली बात कि वो जो खालिस्तान का नक्शा बनाते हैं उस नक्शे में हरियाणा राजस्थान तो सब होते हैं, पंजाब तो सब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का 1 इंच हिस्सा उस खालिस्तान में नहीं होता है, क्योंकि जबकि पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाब में है, हिंदुस्तान में भी पंजाब है। और अधिकारों की जहाँ तक बात की जाए, मानवाधिकारों की बात की जाए या फिर अन्य अधिकारों की बात की जाए तो इंडियन स्टेट में, इंडियन गवर्नमेंट में इन द रिस्पेक्ट ऑफ सिख पॉपुलेशन, इनको सैनिक भी ये होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में भी होते हैं, ये सचिवालयों में भी होते हैं और विभिन्न जगहों पर। तो अगर कोई सिख, खालिस्तानी सिख, सिखिज्म के नाम पे अगर ये कहता है कि नहीं हमें भारत सरकार से खतरा है, अधिकार नहीं मिला है, तो निश्चित ही वो झूठ बोल रहा है। और जो भी सरकार, जिस किसी भी देश की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, उसको ये चीज़ देखना चाहिए। मेरा ये टॉपिक है जी। और बलूचिस्तान और सिंध के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान पर किस तरह से बम्बार्डिंग की वहाँ के लोगों पर, अभी भी वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो है क्या किया जाता है, उस मूवमेंट को किस तरह से ब्रूटली दबाया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान से भी और पीओके से भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिए जाते हैं, जबकि उनके बदले में वो नेचुरल रिसोर्सेज न दिए जाते हैं,
न कोई उनको रेवेन्यू दिया जाता है, न कोई सहायता की जाती है। तो इसीलिए वहाँ का सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक पॉजिटिव सेंस रखता है बनिस्बत खालिस्तान के। जी, थैंक यू। फुरकान भाई, जी मैं अब मैं एक कमेंट कल्चर, एक हाँ भाई, कमेंट एक सेकंड, एक सेकंड। मैं शाह जी एक स्मॉल एक्सक्यूज मी कमेंट गाइस, शाह जी। प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट वन सेकंड। देखें भाई साहब, आपके ख्याल से वो पॉजिटिव मूवमेंट है, इसी तरीके से पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर मैं ये बात कहूँ तो जो आप लोग जम्मू और कश्मीर के रीजन में कर रहे हैं, तो मैं वो उस चीज़ को मेरी नज़र में वो एज अ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी स्टेट की नज़र में वो जस्टिफाइड है। जिस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपके 27 प्लस चल रहे हैं, इफ़ यू वांट मैं उनको बारी बारी उनका बता सकता हूँ, तो फिर मैं उन सबको भी काउंट कर लेता हूँ जो आप लोग असम के अंदर कर रहे हैं। तो द लिस्ट वुड गो ऑन। मेरा मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर डिग लेने की बजाय ना, वाई वी स्टार्टेड दिस चैनल, इस चीज को समझने की कोशिश करें, सो वी कैन स्पीक अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक्स। हम किसी पॉइंट के ऊपर केपीके पे भी बात कर लेंगे। हमारे पैनल के ऊपर केपीके से लोग बैठे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपको पता भी नहीं है वेयर वी कम फ्रॉम इन दोज रिगार्ड्स। हम सिंध के ऊपर बात कर लेंगे, हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे, इसी तरीके से हम कश्मीर पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन आप उस पे बात करें ना। इस तरह की डिग लेना तो बहुत आसान है, मैं भी आपके ऊपर डिग लेता हूँ, आप मेरे ऊपर डिग लें, उससे हम वी वोंट गेट एनी। इट विल बी नॉट फेयर टू दैट ओपिनियन यू होल्ड। आप अपनी ओपिनियन की खुद ही इंसल्ट कर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी थ्रोन आउट। बिकॉज कहीं पे लिखा हुआ आपको टाइटल के अंदर नजर आ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, या हम सिंधु देश के बारे में बात कर रहे हैं, या बलूचिस्तान के। अगर तो लिखा हुआ है तो प्लीज मुझे दिखाएं। उसके बाद आप में से कोई इस तरह की कमेंट मारता है, तो जब हम उसको जवाब देते हैं तो वो कहते हैं जी कि टॉपिक तो ये नहीं, टॉपिक तो ये है। तो लेट्स बी फेयर नहीं एंड नहीं, एंड मैंने लेट्स स्टिक ऑन द सर सब्जेक्ट। आपका सर बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। मैंने इसको एज ए एग्जाम्पल लिया, मैंने देवी टॉपिक जी कुछ डाइवर्ट। बोलना चाह रही थी, जी को। I think Devi is not on the panel. GKM, आप अगर 2 सेकंड में अपना पॉइंट रख लें ताकि हम आगे डिस्कशन मूव करें, और क्योंकि वी आर जी जी, ऑल्सो। उन्होंने कह दिया, उन्होंने एज एन एग्जाम्पल यूज किया है, तो एज एन ओके, एग्जाम्पल ठीक भी है। यूज करने से पहले जब आप वर्डिक्ट सुनाने शुरू कर देते हैं ना अपने एग्जाम्पल में कि एक साइड के जी बड़े उस तरीके से हैं, लुक एट इट इन कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर ये है, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, इंडिया एक नेशन स्टेट है, ठीक है, दोनों एक नेशन स्टेट्स हैं, और उन दोनों के अंदर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और कोई चीजें चल रही हैं उस कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर। ठीक है, आपका ओपिनियन एक पर्टिकुलर सेपरेटिस्ट स्टेट के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वन टॉपिक एट अ टाइम। आप अपने ओपिनियन बताने लग जाएंगे तो टॉपिक तो डिविएट हो जाएगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैशनेट पीपल फ्रॉम ऑल दीज रीजन्स, राइट? आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? आप एग्जाम्पल के शाजी, तौर पे लें, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्डिक्ट ना दें तो हम टॉपिक के ऊपर रहेंगे। दैट्स ऑल अच्छा, व्हाट आई एम। शाजी, चलिए आई वुड रियली लाइक जी। टू इंटरजेक्ट हेयर, क्योंकि जीएमके की मुझे बात जितनी ही अच्छी नहीं लगी, रुपेश भाई की जो सी बात है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है। दैट इट इज बीइंग प्रो खालिस्तानी इज अ वेरी, it's a way by which you can get immigration to western countries. So agar is tarah ho jaye, as all of you know, me being a Pakistani, I would really much like to be in a western country. मैं भी कह दूंगा खालिस्तान जिंदाबाद, कमाल हो जाए। लेकिन एक छोटा सा मसला आ रहा है। शाहजी, इफ यू वुड प्लीज शेयर माय स्क्रीन, वो मसला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ खालिस्तान, और से खालिस्तान जिंदाबाद if these kind of things are happening. नेशनल ये एनआईए ने जो सा एक क्रैकडाउन किया खालिस्तानी टेररिस्ट, अब मैं टेररिस्ट नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं तो कनाडा जाना चाहता हूँ, लेकिन वो स्मगलिंग के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी शो हो रही है। शाहजी,
इंडिया के अंदर ये उन्होंने 53 से ज़्यादा जगहों पे गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ जो सी हैं उनके ऊपर रेड की है। इनके अंदर जो से लोग उन्होंने शामिल उन्होंने बताए हैं, उनके अंदर अराश दल्ला नाम का एक बंदे हैं, लॉरेंस बिश्नोई, द नोटोरियस गैंगस्टर दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट इन द प्रीवियस केस ऑफ a murder that happened in Punjab of a very beloved singer. उसके बाद हैरी मौर है, नरेंद्र लाली है, काला जथेरी है, दीपक तिन्नू, ये उन्होंने कुछ नाम मेंशन किए हैं। आप ये आर्टिकल को मैं थोड़ा ड्रैग डाउन करके दिखा देता हूँ आपको। New Delhi, the National Investigation Agency on Wednesday detained several suspects during a multi-state crackdown. ये सिर्फ उन्होंने पंजाब के अंदर क्रैकडाउन नहीं किया, ये हरियाणा के अंदर था, यूपी के अंदर था, राजस्थान के अंदर था, उत्तराखंड के अंदर था, चंडीगढ़, द फेमस प्लेस फॉर द जाट्स। यहाँ पे देखें इनकी जो सी टेररिस्ट और गैंगस्टर इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उनके अंदर वेपन सप्लाईज हैं, फाइनेंसर्स एंड लॉजिस्टिक्स एसोसिएटेड विद वेरियस हार्डकोर गैंग्स एंड देयर ऑपरेटिव्स, यानी कि जो उनसे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग, उसकी ये बाकायदा पूरा एक कह लें कि इन्होंने सिस्टम वहाँ पे बना के रखा हुआ था। ये जो ड्रग्स वगैरह हैं, ड्रग स्मगलिंग इनके अंदर, इट इज़ एन इंटरनेशनल organization as of right now, not for just freedom of a people or their emancipation, but drug usage. पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, पोर्टुगल, यहाँ के जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको इसके साथ ये आप सारा देख सकते हैं, some of the locations where the raids were conducted on Wednesday. This is a news on 27th. सो ये आज की न्यूज़ है, ये सब कुछ बहुत ही रिसेंटली हुआ है शाह जी। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कुछ हमें नाम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में शाह जी कोई बंदा किस तरह कहे कि भाई खालिस्तान जिंदाबाद, दूर रहना चाहता हूँ, तो अब बताएं क्या किया जाए शाह जी। देखो, बात बात यह है कि ये तो जब या हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट ही किया था तो कोई उसके मुझे इसके अंदर ही बारे हमने ये बोल दिया था। इंडिया का भी इसके ऊपर कहना तो यही है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर क्रिमिनल्स, और ये गैंग वॉर का नतीजा है कि जिसके अंदर निजर भी मारा गया। अब इस चीज को तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। सॉरी शाह जी, मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ जी इसके बारे में, नेचर के बारे में। मैं इजाजत चाहूंगा आप सबसे जी। सभी को नमस्ते शुभ जी, रात्रि, जी। नमस्ते। चलें जी, अच्छा बहुत लगा शुक्रिया आपसे आपका बात आने का करके। फिर होती जी, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू जी के जी। मैं जी बस ये मैं अपने निजर के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। जो निजर के साथ एक और कैरेक्टर है, उसका नाम था रिपु दमन सिंह मलिक, जो एक फाइनेंसर था। उसके ही वाज ए रिच बिजनेसमैन, और he was also part of the 1980s AI 182 bombing of the so he was part of the trial. Now he was released, and there was no evidence found, thanks to the SES's and the RMP or Royal Mounted Police की जो negligence थी, उसके वजह से there were a few of the characters that were let loose, and that one of them was Ripu Daman Singh Malik. Now, Ripu Daman Singh Malik, after 2014, I think it was in 16 or 17, उसने एक लेटर लिखा था to Modi government, thanking him for a few of the things that he had done. He had unblacklisted a few of the characters that were previously blacklisted and were prisoned, and to come to India as well to visit their families. He also thanked him for the
Sahibzade Divas or something like that, and he wrote a letter. This guy was a dodgy character and was in cahoots with Niger as well. Niger is a younger guy compared to Ripudaman. Now, because of that letter, there were sour relationships between Ripudaman and Niger. Ripudaman Singh Malik died in I think he died in a dodgy circumstance. One of them died in a dodgy circumstances, and because of that, it is also a possibility that the gang, there was the whole thing between them, caused this murder of Niger. Very recently, even just today, there was एक और बंदा है, एक character और था, Ajay Singh Bagri, who stood on World Sikh Organization's stage in New York and stated that until we kill 50,000 Hindus, we are not going to rest. ये उसके वीडियो है. I've actually tweeted that video multiple times for people who actually say, oh, we are just looking for we are peaceful guys and we are only looking for a peaceful resolution to this, that, the other. And so for that I say, look, this is your peaceful start and this is your peaceful middle. I don't know what the end will be, but the point is, this guy along with a convicted the guy who was convicted for the bombing, Parmar. I don't remember his first name, but it was Parmar. His mother and Ajay Singh Bagri was seen with Pannu, this guy Pannu, at a referendum site, casting their vote towards the referendum. So the kind of company that you keep is the type of outcomes that you will get. जो जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसी वैसी जैसी संगत रखोगे वैसी आप दिखोगे. So that's the type of people that these Khalistani terrorists are. Sorry, they are being seen with these type of characters, convicted terrorists, people who were responsible for the Air India bombing. तो अभी उसके अंदर रही लास्ट बात जो अभी झा जी ने कही थी कि it is a way to get asylum in Canada, which is true. $35,000 लेके the gentleman that I was talking about, Simranjit Singh Man, takes 35,000 rupees, Indian rupees, to get a letter to people, to lads who are looking for asylum in Canada, that this guy is politically harassed or what have you. And he has actually said it, that you get me, I'll get you a letter for 35. I've charged people for 35,000 rupees to get a letter from me that yes, this guy's life is in danger. So all of this adds up to one thing, and that is, it's like the old good old Tony Montana coming from Cuba as a political prisoner from Cuba, calls himself a political prisoner, but we know the scar is not, or the tattoo is not for his girlfriend, not for his sweetheart. Pitchfork means an assassin. So that's where it all comes down to. Thank you, Mehta. Deviji, you just joined. You have a comment. आप पहले भी आई थी, but I think connection का कुछ issue था. If you want to add something, Deviji. हाँ जी, नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो लोग कहते हैं जैसे सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जैसे ये कहते हैं कि इनको ठीक से रहने नहीं दिया जाता है पंजाब में या इनके ऊपर अत्याचार होता है. आप ये समझो कि मेजॉरिटी ऑफ देम, इन सब की अभी भी लैंड्स हैं पंजाब में, और आप इनके लैंड्स का प्राइस देखो, उन साइज देखो, और जिस तरह की ये हरकतें करवाते हैं पंजाब में थ्रू देयर प्रॉक्सीज इन पंजाब, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कितने की ओप्रेस लोग हैं वहां पर. सबसे बड़ा एग्जांपल तो फार्मर्स प्रोटेस्ट है. इट वाज अ वेरी, मेरा ये मानना है कि वो जेन्युइन प्रोटेस्ट था, और उसमें इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके क्या कुछ किया. लाल किला है जो, इट्स अ नेशनल मॉन्यूमेंट, वहां पे इन लोगों ने बेसिकली सब कुछ रैंसैक करके, जो जहाँ पे भारत का झंडा फहराया जाता है वहां पे इन्होंने अपना निशान साफ फैलाया, और इनको कुछ नहीं किया गया. पुलिस ने, गवर्नमेंट ने इनको कुछ नहीं किया गया. मुझे नहीं लगता किसी और देश में इतनी ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है.
चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, यूएस हो, कोई भी देश हो, वहां पे इतनी फ्रीडम नहीं वो देते हैं कि आप अपने एक नेशनल बिल्डिंग में जाके आपके देश का झंडा फोर्सफुली उतार कर और वो अपने रिलीजियस झंडे को वहां पे फहराना शुरू कर दें। सो आई थिंक दैट शुड सम अप कि इनके ऊपर कितना ऑप्शन किया जाता है पंजाब में। एज रुपेश जी सेड, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इमिग्रेशन टैक्टिक, क्योंकि आप इंडिया से जाओ विजिटर वीजा लेके या स्टूडेंट बन के, और वहां पे जाके आप एक कहानी बना लो। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कौन सा वेरीफाई करना है? आप बेचारे बन जाओ, उन्होंने आपको बेचारा मान लेना है। निज्जर के साथ भी यही हुआ। इनफैक्ट जो निज्जर के ऊपर केस चल रहा था इंडिया में, जिस केस में वो वांटेड था, वो एक मंदिर के पुजारी की हत्या में वांटेड था। उसने उस मंदिर के पुजारी को मार दिया था, मर्डर कर दिया था। और वो पंडित के वो जो पुजारी था उसका वही नाम था जिसका नाम का पासपोर्ट बनवा के वो इंडिया से कनाडा आया था। तो लुक एट द ओडेसिटी ऑफ दिस पीपल। और एक बहुत सीधी लाइन में आप देख सकते हो कि कौन अप्रेस्ड है और कौन अप्रेसर है। That's it. Thank you, Deviji, and I think it was precise and short. So thank you, Shaji. एक्चुअली फुरकान भाई, आई वुड लाइक टू आस्क मेहता, ये जिन लेडी का इन्होंने नाम लिया है उनकी सर्विसेज पाकिस्तान तक प्रोवाइड होती हैं कि नहीं, कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं? वो आप उनको लेडी मत बोलो, वो लेडा है. हिज नेम इज सिमरनजीत सिंह मान. He is the same guy, the same MP that I mentioned earlier. The very same guy who was elected as a MP Yeah, from लेकिन the लेकिन Jila this Sangrur. can be said about all kinds of movement. लोग अहमदी बन के भी चले जाते हैं. तुम अहमदी बन के चले जाओ अगर तुम्हें इतना अरे शौक एक्स है. मुस्लिम बन के चले जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ, लिमिट होती है शादी, यानी LGBTQ बन के भी लोग आ रहे हैं इंग्लैंड के अंदर. तुमने वो बनना है, तुम वो बन जाओ यार. हाँ हाँ हाँ, शादी of लिमिट course. होती है I यानी। know, का कोई I know पॉइंट those तो नहीं guys. है. I know those guys. I have met people. नहीं, इतना पाकिस्तान से डेस्परेट नहीं हुआ LGBTQ अभी बन के. तक। हाँ, तो अभी इतने तक डेस्परेट तुम हो गए हो कि तुम बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस तरह की चीज कर रहे हो. इट्स ऑफ टॉपिक सेड. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, Uh, ओके। नॉट on a अ lighter note, on a yeah. lighter note, Sid, we have some single men probably on the panel. So anyone like interested should contact Sid. ठीक है? Even sorry, So even अच्छा, if I did swing the other way, I'm married. okay, बहुत अच्छा, fair पुट enough. मी अंडर द बस। चलिए, Shaji, Medusa, Sid, any comments? I Or think we should go for a wrap up now. I just yes, wanted I to say agree. on Friday we're going to look at the connection of we might cover a bit of this story again if it develops further. My conclusion in this is pretty. It's a developing story. Let's see. I have been saying since the first three shows which we've done or conducted that the only people who are going to become a casualty out of this are the Khalistani people. Any people who are going to be scapegoat as a used as a scapegoat as a bargaining chip are going to be the Khalistani people, and they don't realize that they've actually in this entire fiasco, India is not losing anything. Neither is Canada. Neither are their relations going anywhere. So that's that. As the situation develops, we will see further what negotiations are carried out. But if for some instance or in regards to the Khalistani people or supporters of this movement who actually believe that they're going to succeed out of this or they're going to benefit or get any even benefit within Canada, I do not think that's going to happen. This is actually going to cost them. It's brought them out in a very bad light. Specifically, what Seeks for Justice leader Pannu has basically stated, it's shown people how radical the Khalistani people can be, and these are the people who were working on the referendum. So, if you're going to have people like that representing you, then I'm really sorry, you're going to lose all sympathy. You can't tell a group of people who happen to be in the same boat as you, who came exactly like you did, who might be, who are also part and parcel of that society, to like go back home.
You cannot do that. You're not a white supremacist, so don't act like one. Look in the mirror. You wear a turban, most likely, and you're brown. You're not white, so you cannot be right. So, again, I am going to tell you another thing as far as our own look into this is going to go ahead, where our next show is going to look into detail in regards to what is Punjabi nationalism within Pakistan, how it's rising, who is supporting Sanja Punjab, which groups exist in Pakistan, and how this is entering, and how Khalistan movement from across Canada, across India, or wherever is infiltrating and playing with them as well, and what is there for them to gain. So we're going to look at that as well. Besides that, we're going to be uploading some of the content which we already had beginning from Muslim, Sikh, and Hindu history from the region of Punjab, beginning from Aurangzeb. So we're going to slowly start uploading some conversations which we've had on other platforms. So anyone who's interested can have a listen to that and see what the actual history was. And we've conducted that we've basically had conversations in regards to that, and they're very insightful and very interesting, all the way from the time of Aurangzeb to 2023 and Amritpal. So that content is soon going to be uploaded very slowly, systematically. Please keep an eye out for that. Thank you very much. That's all what I have to say. If anyone else has a comment, please go ahead. I have a Yeah. small comment. I think it was GMK who took a very sympathetic and an empathetic approach towards certain separatist movements going on in Pakistan. My only comment would be view the separatist movements in India with the same lens. Uh, कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, देयर आर इश्यूज, बट अगर आप सेम लेंस से नहीं अक्रॉस द बॉर्डर देखेंगे तो इट वुड बी हिपोक्रिटिकल, आई वुड से. Rest, I think, looking forward for the next session on Friday. And any other comments said, Pahuja, Medusa, Mehta? Go ahead and then we can close the room. No, just on Shahji's comment, just and I'll give you a bit of a backdrop, just a tiny little backdrop on GKM as well. So Shahji, आपके आपने जो comment किया ना, उसका conclusion तो मैं यही निकालूंगा. It should be no surprise coming from someone like Pannu. All of this stuff will happen. All of these things will be said if the demand is for a theocratic state. वो तो होना ही है. Whether we like it or not, it's going to be like that. If in a country where he has no stake, I mean he's a citizen of that country, but however, for someone that has got no control over the over the policy, for him to sit there and uh, give this type of threats or make these type of commands towards a community. Imagine what type of stuff will happen when these radicals will end up getting, or if they end up getting a state for their own. They are currently getting their own gurdwaras to control by themselves. There has been no control in Bharat or in any other country that I know of anyway. Maybe it's different somewhere else, but in Bharat, certainly there is no government control on the gurdwaras. And they have plenty, these you will see plenty of arguments, plenty fights in relation to the jathedars or the chairman of the committee. One guy's group is beating up another guy's group when the election has happened. So that type of stuff happens all the time. So no surprises of what Pannu says. It's expected from someone demanding a theocratic state. And as for GKM's comments, I agree. Looking at separatist movements for other countries, there's a line in Hum, the movie Hum, where Anupam Kher says, "ये खून बड़ी कुत्ती चीज है, अपने निकले तो दर्द होता है, दूसरे के निकले तो मजा आता है."
that's a villainous line that he had said. So it's a bit like that. So I understand where you're coming from, FA, that it's not it should be looked at from the same lens. The only point that I would put on GKM is that these separatist movements that we talk about, be it the DMK, the Dravidian movement in the south, or the Assam movement that Shahji has mentioned, or the Punjabi movement, all of these, not Punjabi, sorry, the Khalistani movement in Punjab, all of these, including Kashmir, all of these have come about from an external uh, instigation. I'm not pointing the finger at Pakistan, far from it, but that external instigation has come post the East India Company. That's all. Thank you very much. I think we should end the stream now, Shaji.